Morning students. Today we'll discuss about the reforms made in India's agriculture sector to improve the state of farmers. These are mainly known as agrarian reforms, or we can say that the reforms in Indian agriculture. There are mainly three reforms which were made: technical reforms, institutional reforms, and general reforms. So moving towards the reforms, the first one is technical reforms. As the name suggests, technical reforms, that means we have developed some scientific methods of farming, or we have introduced machines in the farming or agriculture sector. So the first one is use of HYV, or high yielding variety seeds. Since 1965, or since the advent of green revolution, we have introduced HYV seeds, and these seeds replaced conventional seeds. These were mainly used in major food grains or main food grains to improve the or increase the production of food grains, so that we can achieve the self-sufficiency in the production of food grains. As we know that these seeds were introduced in 1965 or mid 1960s, and this whole process was known as green revolution. मेनली जो these seeds जो थे इंट्रोड्यूस किए गए थे वो फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो हम फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर सकें एंड कैन रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन imports of food grains. The next point is use of chemical fertilizers. Along with the high yielding variety seeds, chemical fertilizers were also introduced, and these fertilizers replaced the traditional manures and compost. These fertilizers mainly improved the fertility of the soil and increased the total output, or we can say the output has been increased manifolds. The next is use of insecticides and pesticides. To protect the crops from various insects and pests, we have introduced various insecticides and pesticides. These were mainly used in the food grains to protect the crops from being destroyed by the diseases and insects and pests. Various plant protection centers have also been established in this concern, which were being doing continuous research and management practices to improve the farm product or farm production. The next one is scientific farm management practices. Apart from all these technical means which we have introduced, like HYV seeds, chemical fertilizers, some scientific farm management practices were also being introduced that were widely adopted by the farmers. These were the main objective of the scientific farm management was to change the outlook or the perception of the farmers from conventional to the scientific. फार्मर्स का जो आउटलुक था, परसेप्शन था, जो सोच था फार्मिंग को लेके, उसको चेंज करने का जो था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था. और वो क्या था, इसमें कुछ टर्म्स इंक्लूड की गई हैं कि क्या क्या किया जाता था साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर. दीज वर द सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स. Mainly farmers select the crops according to the characteristics or the features of the soil. प्रेपरेशन ऑफ सॉइल्स मीन्स सॉइल की प्रेपरेशन, कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए जो पर्टिकुलर मिनरल्स सॉइल में अवेलेबल होने चाहिए, तो पहले सॉइल को उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा. कुछ मिनरल्स ऐड ऑन जो सप्लीमेंट्स के रूप में हम ऐड ऑन करते हैं, जिंक है, फॉस्फोरस है, वो सॉइल में जो है मिक्स किए जाएंगे. तो दैट वाज द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल फॉर द पर्टिकुलर क्रॉप. क्रॉप रोटेशन, दैट मीन्स टाइम टू टाइम जो है हम क्रॉप रोटेट करेंगे, एक ही पर्टिकुलर लैंड के ऊपर एक ही स्पेसिफिक क्रॉप नहीं ग्रो करते जाएंगे कॉन्टिन्यूसली, जिससे कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल की जो है डेफिशिएंसी अराइज हो जाती है सॉइल में, जिस वजह से उस पर्टिकुलर क्रॉप का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है. इस वजह से हम हर साल जो है क्रॉप्स रोटेट करेंगे, मतलब फसलें बदल बदल के उसी पर्टिकुलर लैंड पे उगाई जाएंगी, जिससे कि किसी पर्टिकुलर मिनरल की जो है सॉइल में डेफिशिएंसी अराइज ना हो. नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स, लाइक किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीड्स का हम यूज़ करेंगे, कन्वेंशनल या फिर जो HYV सीड्स हैं हम उनका यूज़ करेंगे. तो इस तरीके से बहुत सोच समझ के जो है ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी. इसी वजह से इनको हम साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नाम दिया, कि फार्मर्स जो थे काफ़ी सोच समझ के जो है फार्म एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने लगे. द नेक्स्ट वन इज़ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन. हम कल्टीवेशन के लिए जो ट्रेडिशनल मीन्स थे या प्रैक्टिसेस थी उनको छोड़ के जो है मैकेनाइज्ड मीन्स को अडॉप्ट किए, और वी हैव डेवलप्ड मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन. मेनली मशीन्स वर बीइंग यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, जिसकी वजह से हमारा जो टाइम एंड जो एफर्ट्स हैं वो भी रिड्यूस हो गए. एंड मोर ओवर वी कैन से दैट
To avail these machines or mechanized means, cheap credit facilities were also being made available by the government to the small farmers so that they can easily purchase or buy these mechanized means. मेनली जो लार्ज फार्मर्स हैं वो तो इजीली परचेज कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम वॉज फॉर द स्मॉल फार्मर्स कि वो परचेज कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनके पास जो है इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो फार्मर गवर्नमेंट ने जो है चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल की बैंक्स के थ्रू कि उनको लोन दिया जाए ट्रैक्टर्स और एंसिलरी इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करने के लिए। So these were the technical means or the technical reforms. The next reform is institutional reforms. Institutional reform is also known as land reforms or widely known as land reforms. इनमें क्या रिफॉर्म्स या क्या सुधार जो थे वो देखे गए। द फर्स्ट वन इज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। We have already discussed this point, intermediaries. The intermediaries were the zamindars और जागीरदार्स जिनको हम कहते थे, those who act between the state and the soil tillers, जो state government और soil tillers जो थे उनके बीच एक बिचौलिए का mediator का काम करते थे। These intermediaries mainly used to charge the land revenue from the soil tillers and supposed to सबमिट दैट लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। एंड ये जो थे एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। मेनली दे चार्ज हायर लैंड रेवेन्यू और रेंट फ्रॉम द सॉइल टिलर्स, जिससे कि उनकी आउटपुट का एक ज़्यादातर हिस्सा सॉइल टिलर्स की जो आउटपुट का ज़्यादातर हिस्सा जो था ये ज़मींदार जो थे उनसे हड़प लेते थे या उनसे चार्ज करते थे, जिस वजह से सॉइल टिलर्स के पास उनके आउटपुट का या इनकम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बचता था। तो these exploitative activities were largely performed by these zamindars. In institutional reforms, the practices were made by the government to reduce or remove the activities of or the dominance of these intermediaries. इन बिचौलियों का जो प्रभाव था उसको ख़त्म करने के ऊपर जोर दिया गया। And these intermediaries were totally abolished by making the soil tillers the actual owners, और जो टिलर्स थे सॉइल टिलर्स थे उनको एक्चुअल ऑनर्स बना दिया गया, जिस वजह से जो जागीरदार सिस्टम था वो ख़त्म हो गया था। द नेक्स्ट वन इज रेगुलेशन ऑफ रेंट। दोज हु आर टेकिंग द लैंड ऑफ द ऑनर्स to make the farm practices or to perform the farm activities, those who have the small land holdings or those who are landless, they used to take the land of the owners or the zamindars for production purposes. For that purpose the government has fixed maximum rent, that was the 1/3 of the total crop or the total output. That means the owners cannot charge more than the 1/3 of the crop. That was the maximum rent fixed by the government. As a result, the tillers or the tenants can be saved by the exploitative activities. वो लोग जो जिनके पास ज़मीन कम थी या नहीं थी, तो वो जो ज़मींदार्स थे या लैंड ओनर्स थे उनकी ज़मीन को जो है किराए पे लेके प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए जो है मैक्सिमम रेंट फिक्स कर दिया। दैट वाज 1/3 ऑफ द टोटल आउटपुट, कि उनकी जो टोटल आउटपुट है जितना भी उन्होंने प्रोड्यूस किया उसका 1/3 से ज़्यादा जो है रेंट के रूप में चार्ज नहीं किया जाएगा। इस वजह से उनके जो टेनेंट्स थे, जो किराएदार थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाया गया। The next one is consolidation of holdings. What does it mean? What is consolidation of holdings? It means allotting the land to a farmer at one place. कि किसी एक पर्टिकुलर फार्मर को जितनी भी उसकी लैंड होल्डिंग है उसको एक ही प्लेस पे अलॉट कर दिया जाए। ये जो मेन प्रैक्टिस थी वो की गई थी टू रिड्यूस द और रिडक्शन इन द फ्रेगमेंटेशन और स्कैटरनेस ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, जो बिखरी हुई थी जो लैंड होल्डिंग्स की एक फार्मर के पास किसी एक पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा सा लैंड हिस्सा है, किसी दूसरी जगह पे दूसरा है, तीसरी जगह पे तीसरा, या फिर उसकी जो लैंड होल्डिंग्स है 3 या 4 जगहों पे बिखरी पड़ी है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे है। तो इस तरीके से उसको कंसोलिडेट किया गया एट वन प्लेस सो दैट हिज time and efforts can be saved, as well as the cost can also be reduced, कि उसका जो टाइम और एफर्ट्स जो लग रहा है अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन करने में उसको बचाया जाए और कॉस्ट भी जो है मिनिमम आए। इस वजह से जो स्कैटरिंग और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग थी उसको कम करने के लिए कंसोलिडेट किया गया लैंड होल्डिंग। मेनली कंसोलिडेशन का मतलब है अलॉटिंग द लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस, जिससे कि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स कम हो जाए। द नेक्स्ट वन इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। सीलिंग मीन्स द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल होल्ड्स और फैमिली होल्ड्स। उसकी लिमिट फिक्स कर दी गई थी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर एक फैमिली जो है मैक्सिमम कितना लैंड होल्डिंग्स रख सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोमोट द इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन,
कि जो फार्मर्स हैं उनके बीच जो है गैप या फिर जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा ना रहें, मतलब जो लार्ज एंड जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके बीच गैप ज़्यादा ना रहे, इसलिए इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए जो मैक्सिमम लैंड होल्डिंग्स थी या साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स जो था वो फिक्स कर दिया गया था। एंड जो सरप्लस लैंड होल्डिंग्स थी, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स थी मैक्सिमम साइज से भी ज़्यादा, तो उसका जो सरप्लस था वो गवर्नमेंट ले लेती थी एंड लेटर ऑन जो स्मॉल फार्मर्स थे या लैंडलेस लेबरर्स थे उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, सो दैट दिस एफर्ट वाज मेड टू promote the equality in distribution of land holdings among the farmers. The next one is cooperative farming. Cooperative farming was mainly to promote the bargaining power or enhance the bargaining power of the farmers, ताकि वो अपने जो इनपुट्स हैं वो चीप रेट्स के ऊपर या रिजनेबल रेट्स के ऊपर परचेज कर पाए एंड दे कैन इजीली सेल देयर आउटपुट एट बेटर और रीजनेबल प्राइसेस। जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है इसमें फार्मर्स को मिलजुल के जो है फार्मिंग करने के ऊपर जोर दिया गया ताकि वो जो एक सोसाइटी फॉर्म कर लें और अपने इनपुट्स को जो है वो रीजनेबल रेट्स पे परचेज कर सकें और अपनी जो क्रॉप है आउटपुट है वो भी बेटर प्राइसेस के ऊपर बेच सकें, सो दैट इंडिविजुअल एक्सप्लोइटेशन कैन बी अवॉइडेड। एक इंडिविजुअल फार्मर को जो है मिडिल मैन्स जो हैं या जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो ईजीली एक्सप्लोइट कर सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी सोसाइटी वो फॉर्म कर लेते हैं फार्मर्स तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी बार्गेनिंग पावर इन्हांस कर सकते हैं, सो दैट लोकल ट्रेडर्स कैन नॉट exploit the farmers while buying their output. The next reforms are general reforms. In general reforms mainly we discuss about all the combination of the mixture of resources. These were not related to some particular aspect of the farming. The first one is expansion of irrigation facilities. As we have discussed in the problems of Indian agriculture system, that farmers were mainly dependent on rainfalls. That's why our output or the farm output were uncertain. Later on, the permanent means of irrigations were developed by the government, and these were mainly tube wells and canals, so that the farmers were not dependent on the rainfall and output cannot be made uncertain. Due to these permanent means of irrigation, area under irrigation, the cultivable land or area under irrigation has been increased from 17% to 45%. As a result, output also has been increased. The next one is provision of credit. Government has made some provisions of credit for the small farmers or the farmers so that they can purchase inputs and increase their output. And for this purpose, government has established many institutions to provide low rates credit or cheap credits to the farmers. And these were mainly the cooperative societies, RRBs, which were regional rural banks. Commercial banks were also doing activities or functioning in providing farm credit or loan facilities. NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development, that is also the apex banking authority, is established to supervise their functioning. जो RRBs and जो cooperative societies हैं, जो एग्रीकल्चरल या रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनको सुपरवाइज करने के लिए, इनकी फंक्शनिंग्स को सुपरवाइज करने के लिए या डायरेक्ट करने के लिए जो एपेक्स बैंकिंग अथॉरिटी है वो नाबार्ड एस्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट के द्वारा. So in this concern, various institutions were established so that farmers can easily avail the credit facilities to buy their farm inputs and increase their output. या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको जो मनी लेंडर्स हैं या जो महाजन्स हैं जो उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ये प्रोविजन ऑफ क्रेडिट एस्टैब्लिश किया, जिसमें मेनली ये इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए. तो दीज इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो saved the farmers or protect the farmers from the exploitative activities of the money lenders or the landlords. The next one is regulated markets and cooperative marketing societies. To protect the farmers from exploitation of middlemen और local traders, जो local traders और middlemen थे जो farmers को की crop को जो है low prices के ऊपर purchase करते थे, उनकी एक्सप्लोइटेशन से बचाने के लिए जो है रेगुलेटेड मार्केट्स गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई. एंड दीज रेगुलेटेड मार्केट्स ऑफर द फार्मर्स रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज वर आल्सो डूइंग इन द सेम डायरेक्शन. These increases the farmers
bargaining power as well as provide some facilities to the farmers. These facilities include the provisions of storage facilities so that the farmers can store their crops until unless they get better prices for their farmers. And apart from that, timely payments were also being ensured by the regulated market facilities कि farmers को उनकी जो crop का या जो output है उसका payment जो है वो timely provide किया जा सके इन regulated markets के द्वारा जो है ये assure किया गया. The next one is price support policy. To protect the farmers from market uncertainties, markets में जो local traders थे या demand and supply की वजह से जो है वो prices increase या decrease कर रहे थे, उन market uncertainties से protect करने के लिए government ने जो है एक support policy adopt की. And in this support policy, mainly MSP, minimum support policy, was being formulated by the government. What was that? Minimum support price, as we know that is also called the floor price policy. Floor price policy means the prices of the crops or outputs will not fall below this प्राइस. इस प्राइस से नीचे जो है आउटपुट या क्रॉप्स का प्राइसेस नहीं जाएगा, मतलब मिनिमम प्राइस इतना ही रहेगा. एंड गवर्नमेंट जो है एवरी ईयर अनाउंस और प्रीफिक्स द प्राइस ऑफ सर्टेन क्रॉप्स बिफोर देयर सोइंग सीजन. गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए हर साल जो है ये एमएसपी अनाउंस करती है बिफोर द सोइंग सीजन. उनको उगाने से पहले ही एमएसपी अनाउंस कर दिया जाता है सो दैट द फार्मर्स कैन अश्योर देमसेल्व्स दैट दे विल बी एबल टू गेट दिस मच अमाउंट फॉर देयर क्रॉप्स. कि फार्मर्स को अश्योरेंस मिल जाता है कि वो अपनी आउटपुट का एटलीस्ट कम से कम इतना प्राइस तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा. ये इंक्रीज हो सकता है बट डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि ये फ्लोर प्राइस है. इंक्रीज हो सकता है अगर डिमांड इंक्रीज होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ट्रेडर्स परचेज या मार्केट में जो है बायर्स नहीं मिलते हैं तो गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बाय द सरप्लस आउटपुट इन टाइम्स ऑफ मार्केट अनसर्टेनिटीज. फार्मर्स की जो सरप्लस आउटपुट है उसको जो है गवर्नमेंट कमिटेड है परचेज करने के लिए. गवर्नमेंट एफसीआई के थ्रू परचेज, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो है फार्मर्स की आउटपुट एमएसपी के ऊपर परचेज करती है जब मार्केट में अनसर्टेनिटीज होती हैं. सो दीज वर द मेन रिफॉर्म्स और मेजर रिफॉर्म्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड और ऑब्जर्व्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर.